Good morning, everyone, and welcome to Morning Con Call. First, we'll start with technical derivatives update. If you see on Monday's trading session, it was a continuation of Friday's trading session. We opened with a positive bias, and we made a high near about 18,000 or 17,980, and we made a new high in the futures level that is of 18,024. Overall, if you see, index was up by 0.58%. And on the sectoral front, if we see, then again, chemicals and cements were the leaders, and IT stocks were also giving a bounce back and a relief rally from the continuous downtrend they were moving. And on the leaders were oil and gas and FMCG were a little bit lower. If we see on the daily chart, the index was also trading near about 18,000 levels, and we can see we are basically a more or less a consolidation zone in that. And if we see if index consolidates in this zones only, and if we see a breakout of about 18,000 level, then we can see a fresh leg of rally towards 18,500, and surely we could take over the previous half 18,604. So overall, we remain our stance remain bullish on Nifty. If you see on Bank Nifty was a bit a conservative mode on crossing 40,000 level. It was in the yesterday's previous day range only, and it had formed an inside back. So Bank Nifty need to cross above 4,700 to make a new high, and then it can rise towards its new high of 41 plus levels. On the derivative front, if we see, then Nifty futures OI saw a long belt of to the tune of 2.5%. That is addition of 0.35 million shares, and total outstanding stands at 14.5 million shares. Advanced decline ratio was also positive at 161 on the gaining side and the 30 cent stocks on the losing side. PCR was also saw an uptick to the tune of 1.18, so PCR stands on the positive side. And on the options fund, if we see then in the Nifty, the writing we can see at put writing can be seen at 17,800, 17,905. That is addition of 1.6 and 2.27 million shares. On the call option, we in the call side, if we see then 18,200, 18,300 is showing in hurdles for the Nifty. That is addition of 1.23 and 1.15. On the Bank Nifty front, if you see, then Bank Nifty also saw fresh long built up. That is addition of 1%, that is 23,000 shares. And on the options front, also, if we see in Bank Nifty, then 40,500 strike, we can see put writing, and 40,700, we can see call writing. So these are the major zones over here. And overall, if we on the stock specific front, if you see, then three long belters was in Atul Auto, JK Cement, and Aarti Industries. And short belter were seen in top three were Ibol Housing, Coal Indian, Max Financial. On the FI stats, if we see, then we have FI added the near about 10,000 contracts, and their overall short by 66,000 contracts. So their long short trend stands at 25%. And in on the cash head, they again bought to tune of 2050 crores and DI to the tune of 850 crores. And if we see in today's morning session, then SGX is showing that we are giving a gap up opening of 100 points. So we will be crossing 18,000 level. So that would be to wait and watch. And on the call front, if we see, then we have given buy in sale, that is 84 call option in the range of 2.8 to 3.2 with a stop loss of 2 and a target of 5. And on the technical side, we are given buying AU Bank to be bought in the range of 654 to 660, and the stop loss of 644 and target of 683. So that's it from mine. I'll hand over to Varun sir for more updates. Thank you. Yeah, sorry, there was some technical problem. So, a couple of updates from my side. First, on IT sector. So, as per media sources, IT companies are delaying fresher hiring. So, we understand that delay in variable pay, along with the delay in the hiring process, is indicative of slowdown in the sector, and this is likely to have impact on revenues in coming quarter. So, therefore, we have a cautious outlook on the sector. Second update is on TCS. Penumbra, a global healthcare company, has announced that it has successfully completed first phase of cloud migration, for which it had chosen TCS. So post this migration, company is expected to provide better user experience and grow at a quicker pace. So if we look at health science vertical of TCS, it has grown from contributing 7% of total revenue in 2017 to 10% in 2022. So which is a rough CAGR of 15 odd percentage.
So if you compare this 15% CAGR in health science vertical with 8% CAGR overall, so it's a clear sign that the health science vertical grew at a faster rate. Next, we observe a healthy demand into this vertical, and this sector is likely to perform well going forward. Second update on TCS is C&S Wholesale Grocers, which is a US-based wholesale grocery supplier, has selected TCS for its cloud transformation journey. So as a part of this deal, TCS will migrate existing operations to Google Cloud, which will help C&S streamline its operation and support future growth. Deal size is unknown. However, if we look at growth of Google Cloud over past 4 years, it is roughly 48% CAGR. So this is a positive development for TCS, both these incremental updates. So we currently have a hold rating for the stock with a target price of 3110. Next update is on So Many Ceramics. So the company has opened its first exclusive store in Jhansi, Uttar Pradesh, called as Garg Title House. Spread over 1800 square feet. Outlet has most widest and extensive range of so many wall and floor tiles, sanitary and bath fittings across all major categories. The company plans through various stores through a statewide footprint. This is a positive development for So Many Ceramics. We have a constructive view and buy rating on the company with target price of 863. Next update is on Mahindra and Mahindra. So we attended their electric vehicle day, which was organized for analysts, and company showcased their first electric SUV, which is XUV 400. So Mahindra and Mahindra is all set to launch 6 different electric SUVs going forward. So XUV 400 will be launched in next 3 to 4 months, which is in the month of January 2023. Company will hold Fun Fest for customers in October to get their feedback. Other 5 SUVs are expected to hit the market between December 24 and 26. As per company's internal research, 25% of existing SUV buyers would like to consider electric SUV as their next purchase. Management stated that capital expenditure towards electric programs over a period of 3 years would be in the range of 8 to 10,000 crore. So this is a positive development for Mahindra and Mahindra. Yesterday, JSW Steel reported their production numbers. So overall output grew by 22% year on year and 7% month on month to 1.6 million tons. Overall capacity utilization stands at roughly 87%. This is again a positive development for JSW Steel. Last update on KNR construction. So the company saw a dip of 7% yesterday in the beginning of the session. The share price, and then recovered later by the end of the day and was down by around 2%. So this was mainly due to some investor concerns due to delay in receivables from irrigation segment. So KNRC has 26% OB exposure towards irrigation, and state government of Telangana has been delaying the payments. So in terms of other road construction like PNC Infra or SG Infra, companies do not have such high exposure to state government. Majority of their OB is central government, based on which do not have do not have kind of any fund flow issues. So KNRC currently trades at 14 times FY22 consensus, which is a premium over all road construction companies. Our top pick in this space is PNC Infra and SG Infra. So that's it from my side. I now request Kshitija to please take over the call from here. Thank you, sir. Good morning, everyone. Few updates from my side. Vedanta has selected Gujarat for its semiconductor project. The first major step in its 20 million joint venture with Taiwan's Foxconn. So Vedanta obtained financial and non-financial subsidiaries, including on capital expenditure and cheap electricity from Gujarat, to build the semiconductor plants. So next update on SGFC Life. SGFC Life, that United Kingdom-based investment company Aberdeen, is selling up to 4.3 crore shares, representing 2% of SGFC Life insurance company outstanding shares through a block deal to raise over 2,425 crore.
So formerly the company known as Standard Life Arveden, and the base firm has offered shares price band 564.1 to 578.55, which is a discount of up to 2.5% on the script close on 12th September in the block deal. Next update on Tata Consumer Product. Company yesterday updated that the company it has entered the health supplement segment with the launch of plant-based protein powder. Tata GoFit, a health supplement range for women. It is a plant-based, easy-to-mix product formulated with the goodness of gut-friendly probiotics. So, President of Packaged Foods India, Deepika Bhan, Tata Consumer Products said that there has been growing trend for the consumer becoming more fitness conscious in their choices with heightened focus on their nutrition intake. So next update on Reliance. Reliance Jio Infocom satellite unit has received a LOI letter of intent from the telecom department from satellite communication services. According to the industry sources, the LOI was issued to Jio Satellite Communication Limited on Monday, source informed. So the DOT has granted LOT for Global Mobile Personal Communication by Satellite, that is GMPCS service to the company. Next update on coal minister update that ki e-auction 10 commercial coal mines will start on Tuesday, that is today. IRP Infra Company August toll collection rise 35% year on year, which is around 336 crore. Axis Bank tie up with real estate platform Square Yachts to launch a co-branded home buyer ecosystem. So the basically the open door platform will ensure that the completely journey from the searching to buying one's own dream home become hassle-free, efficient and delightful experience for customers. So next update on Happiest Mind, the company announced that expansion of Noida campus to take its capacity to 450 seats in the NCR region. And the launch follows the announcement of Happiest Minds' new office space acquisition of 1600 sitters property in Bangalore in the July this year. Last update from my side, Krishna Institute of Medical Science Service Company acquired 51% equity stake in Kingsway Hospital. So that's it from my end. Now I will hand over to Prabhakar sir for further research update. Thank you and over to you, sir. Thank you, Kshitija. Good morning, team. NAM India has joined hand with DWS, a global AUM company, to list Indian bonds ETF in Europe. So why this is very important is NAM India is the leader in India also for ETF. So there are many ETF. In that, the leadership, 12% market share belongs to NAM India. And the advantage NAM India has is it is a Japanese MNC. It is Nippon AMC. So it is a Japanese MNC. So they are able to get foreign ETF for Indian market. That is very positive. And at these levels, which is below 300 rupees, the dividend yield is also good. So I think AMC companies will start to rally. There is one more news which says that total market AUM of mutual fund is now 39,50,000 crores, and retail investing through mutual fund is more than 50% in that, and retail portion is now 20 lakh crore, and this is the first time this has been achieved, and it has been achieved in August 2022. So, and the PVR Inox would be in focus, as there is one Hindi movie which is released, Brahmastra, whatever it is. Now that is doing very good, and the collection is very good for the last 3 days. So I think there can be some recovery in PVR Inox, but the industry experts are saying every month you need to have one such hits, otherwise it will be very difficult. Z and Sony, they are offering to ease some concession, but till the merger process doesn't happen, there will be high volatility in Z. So you have to be a smart trader rather than getting invested fully there.
Titagar Wagon, I saw one news item there. They have a company in Italy which they bought in 2015, and but it went into problem. Now Italy government has taken over, so the tie-up is with Italy government. They say this is something very positive, and they have transferred the technology to Indian company, that Italian company's technology. So this is going to help them in building a lot of railways. Titagar wagons, their order book is 3,500 crores to 4,000 crores. Let us see how the stock reacts. But we need to understand, more important is stocks which are in focus. They will continue to outperform. Real estate is one sector. Oberoi, your Kolte Patil, DLF, Brigade. These are few companies which will outperform the market. In chemical also, many stocks have started. GSFC, GNFC, Gujarat Alkali Chemical. There are few other companies also which have started to do well. And in banks, now the credit growth of bank is 15.5%. So I think City Union Bank, the smaller banks like City Union Bank, Federal Bank, IDFC First Bank, your Bank of Baroda, Canara Bank, these will do very good compared to your larger banks, but larger banks also will move. Your HDFC, ICICI, your Axis, your State Bank of India, they also will move. But this stocks have not performed for a very long time, so they will also move faster. So, and we like life insurance. ICICI Pru and SBI Life and HDFC Life are very good. And today there is a block deal in HDFC Life, so there can be initial impact, but I think for an investor it doesn't matter. With that, over to you, Brijesh. गुड मॉर्निंग टीम. अभी हम ये जो रिसर्च के कॉल्स है वो हम एक बार हिंदी में कर लेते हैं. स्टार्ट हम आईटी के न्यूज से करते हैं. आईटी में ये रिसेंटली ये अपडेट्स था कि जो भी उनके जो फ्रेश हायरिंग्स हो रही है वो उसमें थोड़े से डिले देखने को मिल रहा है. ये बेसिकली रीजन है उनके जो वेरिएबल पे को लेके जो न्यूज जो चल रहा था कि वो जो स्लो दिख रहा है. तो ये थोड़ा सा कंसर्न रहेगा आईटी के लिए. तो हमारा थोड़ा सा कॉशियस भी है ओवरऑल आईटी पे. अभी रिसेंटली थोड़ा सा हम ट्रेडिंग बाउंस वगैरह देख सकते हैं, बट थोड़ा डायरेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा कॉशियस व्यू मेंटेन कर रहे हैं आईटी सेक्टर के ऊपर. उसी में आईटी को रिलेटेड और एक न्यूज है. ये पेन्यूम्ब्रा एक जो ग्लोबल हेल्थ कंपनी है उसने अनाउंस किया है कि वो कम्प्लीटली उन्होंने क्लाउड इमिग्रेशन उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट किया और ये क्लाउड इमिग्रेशन करने को उन्होंने टीसीएस को चुना है. सो टीसीएस में हमने देखा है कि इसका ये बेटर एक्सपीरियंस है और वो काफी अच्छा उनका उसमें सपोर्ट है. तो ये टीसीएस के लिए काफी ये पॉजिटिव न्यूज है. और टीसीएस का अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल उसके वो 7% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया था 2017 में और 10% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया था 2022 में ये क्लाउड इमिग्रेशन के चलते हुए. सो ओवरऑल ये कंपनी के लिए अच्छा न्यूज है. तो ये पॉजिटिव रहेगा टीसीएस के लिए. आगे का जो न्यूज है वो भी टीसीएस को रिलेटेड ही है. एक जो यूएस में जो ग्रोसरी जो काफी बड़ा C&S होलसेल ग्रोसरी बोलते हैं, तो उन्होंने भी टीसीएस को ही चुना है. उनके जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस है जो क्लाउड इमिग्रेशन के वगैरह, तो उसमें वो टीसीएस को ही उन्होंने वो प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया है. सो इसका डील साइज तो फिलहाल अभी पता नहीं है, बट अगर हम देखते हैं तो लास्ट के 4 साल से तो ये 48% के CAGR के परसेंटेज टर्म से ये ग्रो किया है. तो ये एक हेल्दी ग्रोथ है. ये आगे चलते हुए इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज को काफी बेनिफिट करेगा. ओवरऑल हमारा टीसीएस हमारे बाय रिकमेंडेशंस पे है और हमारा टारगेट प्राइस 3110 का है टीसीएस में. तो फिर आईटी में ओवरऑल मंदी होने साइडवेज की मंदी होने के बावजूद टीसीएस एक ऐसा स्टॉक है जिसमें हमको ग्रोथ परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा. अगला न्यूज है सोमानी
सोमानी सिरामिक्स के ऊपर उन्होंने झांसी उत्तर प्रदेश में एक एक्सक्लूसिव स्टोर ओपन किया है, गर्ग टाइल हाउस। इसमें इनका 1800 स्क्वायर फीट के ये वाइड रेंज में है, और इन्होंने काफी सारे इसमें फिटिंग्स और जो उनके जितने भी ब्रांड्स है, जो भी हाई ब्रांड्स, लो ब्रांड्स, मिड सेगमेंट, सब उन्होंने डिस्प्ले पे रखा हुआ। और कंपनी बता रही है कि आगे चलते हुए ओवरऑल वो इंडिया में उनके प्रेजेंस बढ़ाएंगे। तो ये एक वन ऑफ द पॉजिटिव न्यूज है, उनके सेल्स को डेवलप करेगा ये। सो द हमारा हमारा बाई रेटिंग है स्टॉक के ऊपर 863 के टारगेट के लिए। इसके अलावा हमने कल M&M के इलेक्ट्रिक के ईवी डे को हमने हमारे एनालिस्ट ने इसको अटेंड किया है, जिसमें कंपनी ने बताया है कि वो 6 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले दिनों में लॉन्च करेंगे, जिसमें से XUV400 जो है वो लॉन्च करेंगे जनवरी 2023 में, और बाकी के जो 5 सेगमेंट्स है वो आने वाले दिसंबर 2024-26 में वो ज्वाइन करेंगे। ये जो XUV400 का जो लॉन्च होगा उसके लिए वो एक फीडबैक शो भी अरेंज करेंगे अक्टूबर के मंथ में, जिससे वो कंपनी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या फीडबैक है। कंपनी का ओवरऑल ये मानना है कि इलेक्ट्रिक सेगमेंट में जो है वो 25% की ग्रोथ देख सकते हैं, और कंपनी ये भी बता रही है कि आने वाले 3 से 4 सालों में वो इसमें R&D के लिए भी ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, विच वुड भी कुछ 8,000 से 10,000 करोड़ के आसपास होगा। तो हमारा ओवरऑल हमारा पॉजिटिव व्यू है M&M के ऊपर। उसके आगे चलते हुए और एक न्यूज अपडेट है केनार के कंस्ट्रक्शन के ऊपर। कल हमने ये स्टॉक को 7% इंट्राडे में हमने डीप देखा था, बट क्लोजिंग तक स्टॉक रिकवर कर गया और 2% तक के लो रेंज में वो क्लोज आया था। इसका मेन रीजन ये है कि इसमें इसके जो रिसीवेबल्स जो होते हैं, मेनली इसके जो 40% जो बिजनेस है उसका वो इरिगेशन सेगमेंट में आता है। तो उनके जो इरिगेशन सेगमेंट का जो रिसीवेबल्स है वो स्टेट गवर्नमेंट से आते हैं, और वो स्टेट गवर्नमेंट से उनका थोड़ा डिले हो रहा है। मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स को आप अगर इरिगेशन के देखेंगे तो इनके फंडिंग्स आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलते हैं, बट ये केएनआर के केस में जो फंडिंग है वो स्टेट गवर्नमेंट से आने वाला है, और जो आ रहा है, और वो थोड़ा सा डिले है, जिस वजह से फॉल स्टॉक में हमको थोड़ा सा फॉल देखने को मिला था। ये सेगमेंट में हमारा जो बेस्ट पिक है वो PNC इंफ्रा, HG इंफ्रा है। इसके आगे जो न्यूज है वो वेदांता के ऊपर है। वेदांता ने गुजरात को चुना है सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स में से, और गुजरात स्टेट में वो सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ये उन्होंने फर्स्ट 20 बिलियन जॉइंट वेंचर के जो ताइवान के जो फॉक्सकॉन कंपनी उसके थ्रू किया है। तो वेदांता फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों ही कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के साथ ये आगे चलाएगी। चीप इलेक्ट्रिसिटी के जो सेमीकंडक्टर प्लांट है ये वो बनाएंगे गुजरात में। तो ये पॉजिटिव न्यूज रहेगा वेदांता के लिए। अगला न्यूज टाटा कंज्यूमर के ऊपर है। टाटा कंज्यूमर ने सोमवार के दिन ये बताया था कि वो एक हेल्थ सप्लीमेंट्स के सेगमेंट में वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है, जो प्रोटीन पाउडर बेस है, जो इजीली आप मिल्क या फिर पानी में आप मिक्स करके उसको खा सकते हो। बेसिकली ये हेल्थ सप्लीमेंट ये वुमेन सेगमेंट के लिए है, जो इजी टू मिक्स वगैरह रहेगा। ये हेल्थ कंसर्न के हेल्थ रिलेटेड है कि आजकल काफी सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए, तो ये उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया और वो इसको काफी पॉजिटिवली देख रहे हैं। तो हमें भी टाटा कंज्यूमर ओवरऑल शॉर्ट टू मीडियम टर्म में हमें पॉजिटिव लग रहा है। अगला न्यूज है एक्सिस बैंक के ऊपर। एक्सिस बैंक ने टाई अप किया है एक स्क्वायर यार्ड, जो एक रियल एस्टेट एजेंसी है, जिसके थ्रू वो अपने जैसे जो जिनको घर ढूंढना होता है, तो वो एक स्क्वायर यार्ड करके एक साइट है जहाँ से आप घर वगैरह सिलेक्शन कर सकते हो। तो एक्सिस बैंक ने उनके साथ टाई अप किया है, तो ये एक शॉर्ट टर्म में ये पॉजिटिव न्यूज रहेगा एक्सिस बैंक के लिए।
अगला न्यूज है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के ऊपर। सो उन्होंने 51% एक्वायर किया है मेडिसर्च लाइफ साइंस किंग्सवे हॉस्पिटल में। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज रहेगा कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के लिए। इसके आगे चलते हुए हमें ये नाम इंडिया को देखा है। नाम इंडिया जो नॉर्मली ETF बिजनेस में उसका 12% का मार्केट शेयर है। तो जो नाम इंडिया जो है वो बेसिकली जापानीज MNC ये इसको ऑपरेट करती है। सो बेसिकली ये काफी अच्छा है, 300 के लगभग है। ये डिविडेंड काफी अच्छा देता है, तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो नाम इंडिया पे हमारा पॉजिटिव तो ओवरऑल एक म्यूचुअल फंड के ऊपर भी आप म्यूचुअल फंड के जो कलेक्शंस है वो AUM का काफी अच्छे हुआ, 39 लाख के करीब 39 लाख करोड़ के करीब हुआ है, जो काफी अच्छा देखने को गया। और 20 लाख करोड़ अगस्त 22 में देखा गया। तो ये काफी ज्यादा म्यूचुअल फंड में हमारा इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है, ये देखने को मिल रहा है। दूसरा एक न्यूज है जी और सोनी के ऊपर। जियो दोनों के जो मर्जर है उसमें वो कंसेशंस वगैरह कंसेशन देने की वो बात करे एंड यूजर को। न्यूज के चलते हुए थोड़ा हाई वॉलेटिलिटी रहेगी, तो हम इसमें ट्रेडिंग के हिसाब से फिलहाल व्यू रखते। तो लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करते, बट ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें व्यू बना सकते हैं। अगला न्यूज है टिटागर वैगन के ऊपर। टिटागर वैगन को ये इटली में 2015 में ये बेसिकली इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था, लेकिन अभी टिटागर वैगन को इटली के गवर्नमेंट ने टेक ओवर उन्होंने वापस उसमें उन्होंने टेक ओवर कर लिया, और उन्होंने उनके जो टेक्नोलॉजी है वो इंडियन गवर्नमेंट को शेयर किया। सो बेसिकली उनके पास 3500 से 4000 के ऑर्डर बुक्स है, तो पॉजिटिव न्यूज रहेगा। तो टिटागर वैगन में आने वाले दिनों में रेलवे को रिलेटेड काफी अच्छे देख सकते हैं। तो बेसिकली ये पॉजिटिव न्यूज रहेगा टिटागर वैगन के लिए। स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक में रियलिटी में हम मेंटेन कर रहे हैं कि ओवर रियलिटी, कोरे पाटिल, DLF और ब्रिगेड जैसे कंपनी में हमें ध्यान रखना चाहिए, और इसमें हमें पॉजिटिव व्यू हम मेंटेन कर रहे हैं। केमिकल्स स्टॉक्स में GSFC, GNFC, गुजरात अल्कली, इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए। हम बोल रहे हैं कि इसमें मार्केट में जिस हिसाब से तेजी देखने को मिल रहा है, हमें इसमें काफी पॉजिटिव रहेगा। बैंक स्पेसिफिक में जो 15.5% का क्रेडिट ग्रोथ देखा है हमने, उसमें स्पेसिफिकली जो छोटे बैंक है लाइक आपके सिटी यूनियन बैंक है, फेडरल बैंक है, IDFC बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक, डेफिनेटली प्राइवेट बैंक्स भी लीड करेंगे। बट जिस हिसाब से क्रेडिट ग्रोथ को हम देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि ये छोटे बैंक्स में ज्यादा आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। जो लास्ट एक है जो लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर, HDFC लाइफ और SBI लाइफ और HDFC लाइफ, ये दोनों पे भी हमें पॉजिटिव व्यू मेंटेन कर रहे हैं। तो हम ये सेक्टर स्पेसिफिक हमें स्टॉक्स पे ध्यान रखना चाहिए, और ओवरऑल व्यू हम बुलिश ये मेंटेन करके चल रहे हैं। तो ये पॉजिटिव डे रहेगा आज के दिन के लिए। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। हैव ए गुड डे।